Hello students, today I am providing you the notes of chapter number 13, that is Our Home Earth, a unique life sustaining planet. Means जो हमारा planet है, जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी, अर्थ, वो कैसे लाइफ को सस्टेन करता है, कैसे उसको कायम रखता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. Okay, so notes are provided in the form of question answer so that you can easily attempt any type of question in your upcoming exams. So question number 1 is, what do you think Earth would look like if there were no life on it at all? Means अगर Earth पे life नहीं होती तो जो Earth है उसका look कैसा होता? Okay, so you will write it would look similar to the moon or Mars. Its appearance would rocky or grey brown. ठीक है, मतलब ये मार्स की तरह या फिर मून की तरह दिखता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, लाइफ ऑन अर्थ हैज सर्वाइव्ड फॉर billions of years. Billion of year is a very very long time. What allows it to keep going despite major changes and disasters? Means जो लाइफ है वो अर्थ पे billions of years से कंटिन्यू है. ठीक है, in spite of जो डिजास्टर या चेंजेस है उसके बाद भी लाइफ कंटिन्यू है. तो why it is so? So you will write, life is continued on earth ड्यू टू राइट एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन को मेंशन जरूरी है करना, ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे रिक्वायर ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड स्टेबल प्लेनेटरी कंडीशन. ओके, सो ड्यू टू ऑल दिस लाइफ इज कंटिन्यूड ऑन अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डोंट डॉग्स ले एग्स और hen give birth to chicks? You all know dogs जो है they give birth to their babies and hen they lay eggs first and then the new hen is hatched from that egg. ऐसा ही होता है. तो why it is so? So you will write, dogs are viviparous animals. ठीक है, जो dogs की कैटेगरी है that is viviparous animals. और viviparous क्या होते हैं? The animals which give birth to young ones. नेक्स्ट इज, hens are oviparous birds. oviparous क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट गिव एग्स. ठीक है, वो एग्स देते हैं फर्स्ट. एंड नेक्स्ट इज, उनको एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को. एंड बेबीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेड एग्स. ओके, सो इससे आपकी दो न्यू डेफिनेशन भी कवर होगी. व्हाट आर विविपेरस एनिमल्स अलोंग विद देयर एग्जांपल एंड व्हाट आर ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर एग्जांपल. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, if a space if a spaceship carried soil and water to Mars, could plants start growing there? अगर हम जो स्पेसशिप है उसमें मिट्टी या पानी लेके मार्स पे चले जाएं तो क्या वहां पे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं? So you will write no, because adverse environmental factors like atmospheric pressure जो कि मार्स के कंडीशन है, temperature and radiations are लीदल टू प्लांट लाइफ. लीदल का मतलब होता है बच्चों किलर. ठीक है, जो डेडली टॉक्सिक होते हैं प्लांट लाइफ के लिए. सो टू ग्रो प्लांट्स ऑन मार्स, अगर मार्स पे प्लांट ग्रो करने हैं तो यू शुड यूज कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, जिसमें यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, द प्रेशर अलॉन्ग विद द क्वालिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज, एक्सपेंड द फॉलोइंग. एक्सपेंड का मतलब है यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म. इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडियन एजेंसी है. इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन अंतरिक्ष भवन, बेंगलुरु, इंडिया. ओके, you must know about the next agency, that is NASA. It is a famous agency. Okay, National Aeronautics and Space Administration. It is an agency of United States. Clear? And its headquarter is in Washington DC. Is at Washington DC. So question number 6 is, why is Earth a unique planet? जो पृथ्वी है वो एक अनोखा ग्रह क्यों है? So you can write, Earth is the only planet with perfect factors like liquid water, atmosphere with oxygen, moderate temperature means neither very hot or very cold, temperature range and protective magnetosphere. If you will not write magnetosphere, you can simply write magnetic field. इन दोनों में से कोई एक लिख लेना. ठीक है, due to all these factors, Earth is a unique planet. ठीक है, so question number 7 is,
What are different layers of earth? So earth has four main layers. Crust, it is thin, rigid, outermost layer, okay. Then mantle, a thick layer of rocks, इसमें चट्टानें आती हैं. थर्ड वन इज रॉक बिलो द क्रस्ट, ये जो लाइन है ये मेंटल की है सेकंड वाले की. और थर्ड यहाँ से स्टार्ट करना है. आउटर कोर, अ लिक्विड लेयर मेनली विद आयरन एंड निकल. एंड फोर्थ वन इज इनर कोर, a solid very hot ball of iron and nickel. You can also draw the diagram in which you will represent the lithosphere. Lithosphere is the outermost layer of earth on which the plants and animals we all live. ठीक है. लिथोस्फेयर में दो पार्ट आएंगे. एक तो जो क्रस्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर थी अर्थ की वो क्रस्ट, और जो आउटरमोस्ट पार्ट है मेंटल का, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर. फिर लिथोस्फेयर, देन क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. और ये जो पिक्चर है दैट इज ऑफ अर्थ लेयर. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज सोलर सिस्टम. ठीक है. So solar system include a central star. It is interesting to know sun is also a star. जो सूरज है बच्चों वो भी एक तारा है, एक स्टार है. ठीक है. Include a central star, ब्रैकेट में लिखा है मैंने the sun, and everything that revolves around it. और इसके अराउंड जो भी रिवॉल्व करता है, ड्यू टू किस वजह से रिवॉल्व करता है, ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. एंड एवरीथिंग जिसकी हमने अभी ऊपर बात करी, तो एवरीथिंग में क्या क्या आएगा, एवरीथिंग इंक्लूड 8 प्लैनेट्स. ठीक है, 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, मतलब उनके जो मून है साथ में, ड्वार्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो. ठीक है. एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड dust means जो धूमकेतु, dust particle etc. they all are revolving around the central star that is sun in a solar system. Clear? और important facts about solar system है, तो ये आपको क्विज कंपटीशन में 1 मार्क्स में या फिर नेक्स्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं जरूर से मिलेंगे कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट सोलर सिस्टम. फर्स्ट है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकरी. सेकंड, फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर, इज नेपट्यून. हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज विनस. कोल्डेस्ट प्लैनेट है यूरेनस. रेड प्लैनेट की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे कि कॉमन नेम जो है रेड प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ऑरेंज प्लैनेट कौन कौन से है. तो रेड प्लैनेट है मार्स. और क्यों रेड दिखता है वो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Fe2O3. ओके. ब्लू प्लैनेट यू ऑल नो, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. Then green planet which is Uranus due to the presence of methane gas. इसका फॉर्मूला है CH4. C means carbon, 4 atoms of hydrogen. Then green planet Uranus, okay, yellow and white. जो Venus है that is also known as yellow and white planet. येलो का आंसर भी वीनस है और व्हाइट भी वीनस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलोइश व्हाइट क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर्मूला इज H2SO4. Okay. Then next is orange planet Jupiter. It is orange and having orange and white bands formed from hydrogen, helium and ammonia with the formula NH3. उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर अदर 7 planets have atmosphere. मरकरी डज नॉट कंटेन एटमॉस्फेयर. इसमें एक थिन लेयर होती है, वेरी थिन लेयर, जिसको एग्जोस्फेयर बोलते हैं. अदरवाइज इट has no atmosphere. Okay. Next question is why Venus is the hottest planet. अब सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है दैट इज मरकरी, बट Venus is the hottest planet. So why? You will write Venus atmosphere is very thick and mainly contain carbon dioxide which do not allow the absorbed heat to escape, मेकिंग वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है वीनस के एटमॉस्फेयर में, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड डज नॉट अलाउ द एब्जॉर्ब हीट टू लेट इट एस्केप फ्रॉम द planet. That's why Venus is the hottest planet of our solar system. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से जो CO2 की ने हीट अब्सॉर्ब किया और हीटिंग इफेक्ट शो किया, इससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट question not only for 8th class but also for the higher classes. Okay, upcoming higher classes. So सबसे इजी डेफिनेशन जो है ग्रीन हाउस की वो क्या हो सकती है, वो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन
reflected back from Earth's surface and increase the temperature of Earth. मीन्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यू कैन ड्रॉ द पिक्चर और डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो यू विल सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन से वी ऑल नो सोलर रेडिएशन आती है, स्ट्राइक करती है ऑन द अर्थ सरफेस और रिफ्लेक्ट बैक होके उनको जाना चाहिए वापस आउटर स्पेस में। बट जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है, वो क्या करती है, वो इन रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और वापस इनको अर्थ पे ही सेंड कर देती है या फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और इंक्रीज करती है अर्थ के टेम्परेचर को। This increase in the temperature is greenhouse effect. ये effect greenhouse है और it is the main reason for global warming. Okay. So next is what makes the earth suitable for life to exist, or it can be also asked as why life is possible only on earth. So you will mention about the four main points as given in your book. First is position of earth. Earth lies in the habitable zone और गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, तो साथ में इनकी डेफिनेशन भी करते चलेंगे। गोल्डीस्टॉक, ये जो गोल्डीलॉक जोन है या हैबिटेबल जोन है, वो क्या होती है बच्चों, रेंज अप टू विच वाटर रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। ऐसी रेंज जहां तक पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तरल अवस्था में, द्रव्य अवस्था में रह सकता है। And you all know water is essential for all forms of life. So first reason clear, ठीक है। Second, size of earth. So this, in this you will write earth has right size to support an atmosphere, neither too small neither very large. It has oxygen essential for life. Okay, its atmosphere has ozone layer which protect us from harmful UV radiations, ultraviolet radiations. Okay, next third is magnetic field of the earth behave as a giant magnet। ठीक है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द हार्मफुल कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड्स। क्लियर। एंड फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ फोर मेन स्फीयर्स। ये जो फोर मेन स्फीयर्स हैं विच इंक्लूड हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज, जियोस्फीयर, solid part of earth, biosphere, living organisms along with their habitat, and atmosphere, important gases like oxygen and carbon dioxide। ऑक्सीजन जो है वो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग लेते हैं, रेस्पिरेशन में यूज करते हैं या ब्रीदिंग में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू ऑल नो इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये इनसे, इस टॉपिक से आपकी चारों जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर होगी कि व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर टू व्हाट इज एटमॉस्फेयर। These are the four main reasons due to which Earth is the only planet where life is possible. Okay, this question is also clear. Next is question number 12. What is the importance of balance on Earth? Or you can also be asked like, Earth is a giant teamwork project. Comment on this statement. So you will simply write, there is an interaction between living and non-living and the earth itself. A balance between these three is important to keep the earth habitable. Okay. Question number 13 is, what keeps life from disappearing? Or you can also be asked, does air, water, sunlight are only the condition for continuation of life on earth? Means क्या जो वाटर है, सनलाइट है या एयर है, सिर्फ उनसे ही लाइफ जो है वो अर्थ पे कंटिन्यू रह सकती है। सो यू कैन राइट along with suitable atmosphere, reproduction play important role for continuation of life on earth. Along with these three factors, air, water and sun, reproduction is also the main important factor. Okay, types of reproduction. Asexual reproduction is no gamete formation, okay, and the offspring, or you can write new one, is identical to the parent. Look carefully, here I am writing only parent, not the parents, means asexual reproduction में only one or single parent is involved. ठीक है, next example है asexual reproduction के, budding in hydra, binary fission in amoeba and fragmentation in planaria. So these all are animals. So it is the example of asexual reproduction in animals. Next is the sexual reproduction, in which gametes are formed, offspring are different from parents,
फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. पेरेंट्स हैं तो मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट, मेल एंड फीमेल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 is write a short note on asexual reproduction in plants. So you must know asexual reproduction in plants is also known as vegetative propagation. Vegetative propagation पे क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका भी यही आंसर होगा. ठीक है. Many plants can reproduce through leaf, stem or root. For example, potato reproduce through tuber containing eye. Second is ginger, जो अदरक है, that reproduced by modified stem, which is also known as rhizome. Next is sexual reproduction in plants. So plants have anther, which is the male part and produce pollen grains. Ovule, which is the female part and contain egg cell. So look here carefully. Pollen grain is the male part, egg cell is the female part. Pollen grain is taken to the female part through either air or wind, water or birds. And this transfer of pollen grain to the female part, that is known as pollination. तो एक नई टर्म स्टडी कर लिया आपने, pollination. Okay, male and female gamete fuse to form a zygote, then seed and then the new plant. So it is the sexual reproduction in plants. Okay, next is sexual reproduction in animals. It is very simple. Sperm cell, which is a male gamete, fuse with the female gamete, that is egg cell. फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट. जाइगोट के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म. अब जो फर्टिलाइजेशन है मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है. दैट कैन बी इंटरनल जैसा ह्यूमन बींग्स में और डॉग्स में होता है, और एक्सटर्नल जैसा फ्रॉग्स के केस में होता है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ बेबी, जो बेबी की डेवलपमेंट होगी दैट कैन बी इंटरनल, एग्जांपल विल बी सेम ह्यूमन बींग्स एंड डॉग्स. एंड एक्सटर्नल भी हो सकती है जिसमें फर्स्ट एग्स आर लेड, जिसमें पहले एग देती हैं जो फीमेल पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल हेन, और फिर उस एग से बेबी बनता है. क्लियर. सो कमिंग टू द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. जीन्स. व्हाट इज जीन? जीन या जीन्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring or from one generation to another. So genes are the basic unit of heredity. These are actually a part of DNA और RNA. जो DNA और RNA होती है इनकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA. ठीक है. दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यहाँ पे दैट होगा THAT, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू बेबी. ओके. नेक्स्ट इज geodiversity. It means variety of rocks, soils and landforms. Next question is what are the threats to life on earth? So life जो है अर्थ पे उसको थ्री मेजर थ्रेड्स हैं. फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज होता है स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न. जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली देखा है. ठीक है. समर में रेनी सीजन था, जो नेक्स्ट सीजन है उसमें रेनी सीजन अभी तक कंटिन्यू है जबकि रेनी सीजन का टाइम नहीं है. दीज आर द क्लाइमेट चेंजेस. ओके. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इसका साथ में क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. ओके. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन जो हैबिटेट लॉस हो रहे हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, प्लांट्स के. सो द मेन रीजन is उसका deforestation and increasing human population is the main reason. Okay. Third one is pollution. Pollution can be air pollution, water or soil pollution. and इसका जो main reason है उसका maximum जो contribute करता है that is our activities, जो human activities है. ठीक है. उसके बाद important facts हैं. अगर आपके स्कूल में कभी कोई क्विज कंपटीशन होता है या इस टाइप का कोई कंपटीशन तो उनमें ना ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यू मस्ट नो. ठीक है. जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी दैट वाज इन 1987 एंड इट इज रिलेटेड टू फॉर रिडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके. अर्थ समिट वाज इन 1992 that is related to climate change and biodiversity. Next one is Kyoto Protocol in 2005 and Paris Agreement in 2015. They aims to reduction of greenhouse gas emission. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है. व्हाट इफ, क्या होता अगर अर्थ वर मच स्मॉलर, अगर अर्थ का साइज छोटा होता, इट्स ग्रेविटी वुड हैव
वीक वीक ग्रेविटी होती टू होल्ड द गैसेज इन द एटमोसफेयर, और जो गैसेज है हमारे एटमोसफेयर में वो एस्केप हो जाती है आउटर स्पेस में, मतलब लाइफ विल नॉट पॉसिबल इफ द अर्थ वर मच स्मॉलर, ठीक है। और सेकंड है व्हाट हैपन इफ द अर्थ वर मच लार्जर, बहुत ज्यादा लार्ज होती है अगर हमारी जो अर्थ है तो क्या होता, इट्स ग्रेविटी वुड वेरी स्ट्रॉन्ग pull us down to the planet and our bones could get crushed, और हमारी ये जो हड्डियां हैं बोन्स हैं वो क्रैश हो सकती थी अगर अर्थ का साइज ज्यादा होता तो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद दिस चैप्टर एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।